Hi guys, what's up? It's Vitasta. Welcome back to my channel. And I think to myself, what a wonderful world. The main reason to make this video is that मुझे बहुत चुल मच रही थी कि मुझे दिखाने हैं ये कपड़े. I don't know why. I just feel like कि मुझे अच्छा कलेक्शन मिला है तो मुझे शेयर करना चाहिए. और ये बहुत टाइम से पड़े हैं मेरे पास. ना मैंने रिटर्न कर पा रही हूँ, ना मैंने पहन पा रही हूँ अच्छे से, ना मैं कबर्ड में डाल पा रही हूँ, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा. सबसे पहले तो the main reason why I bought all these clothes is my poor management planning. So मैं मुंबई सिर्फ कुछ दिन के लिए आई थी एंड उसी हिसाब से मैंने कपड़े भी लाए थे. लाइक बहुत कम कपड़े, 3-4 टी शर्ट्स एंड ब्ला ब्ला. बट मुझे यहाँ 1 महीने के ऊपर हो गया है. आई डोंट नो, कुछ ना कुछ आते गया. आई एम काइंड ऑफ स्टक हियर. No offense to Mumbai. And I was out of clothes, so I had to shop. Because I was working from here, I was making videos from here, I had to go out. And these are mostly basics and some are not exactly my style, but I wanted to like get out of my comfort zone. And the most important reason is that I have gained weight for now and some clothes are not fitting me as well as they were fitting me a month ago. Happens guys, it happens. So I had to get new pants and stuff. So yeah, that's my life right now. Without further ado, let's start this haul. और सबसे पहले basic t-shirts पे आते हैं. The first t-shirt that I got is this very cute sky blue color collar t-shirt. It's kind of cropped, not too cropped but not a full t-shirt, and I love the white neck, white and blue contrast. It's very cute. H&M में आजकल collars का बहुत फैशन चल रहा है, मैंने देखा. I don't know if it's just H&M, but I saw a lot of collared things. So this one fits really nicely. It's in the size small and the fit is kind of oversized. The next one is one of my favorites. It's this baby pink crop top which also has a collar. It's a proper crop top with short sleeves. जो neck है इसका थोड़ा सा बड़ा है, which is not usually what I wear. It didn't look vulgar or anything. And since it has this open collar thing, I got it in size medium because maybe अगर small लाती तो थोड़ा सा खुला सा लगता. The next top is again a collar top. I'm so sorry. So this is also in size medium. It has a larger collar area and full sleeves. It's a rib knit top, kind of stretchable. My arms are short तो थोड़ा arm से थोड़ा hands तक आ जाता है. The fit is nice. The only problem is that neck is a little deep for me. So maybe I can stitch it here or wear a camisole inside or something, but otherwise it looks really pretty, very nice and very classy. I'm getting over with the collar tops. The next top is this black top. इसका tag नहीं निकाला because I've not worn it yet, but this is one of my favorites. It's also a rib knit. The fabric is really nice, very pretty, and it looks amazing when worn. This is also in size medium. इसका collar बहुत अच्छा है, इसमें buttons लगे हुए हैं. इसका जो front make है, it's kind of like a cardigan, and the neck is not too deep or anything. पहन के it looks really classy and pretty. The sleeves are also very sweet. I love them. By the way, these buttons are attached to it. ये नहीं खुलते हैं. Next one is a green t-shirt. Very unusual color for me. Has this cutout thing in between. Green is an unusual choice for me because I have nothing in green. Literally, this is kind of like my first t-shirt in green color. I'm kind of collecting all the major colors क्योंकि when I work with brands, most of the times they need a color for their brand video. बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे पास वो particular color नहीं होता है. So that's why I am trying to gather every possible color that I can, and I personally feel bright colors look better on me. And this is in size small. अगर ये medium में लेती तो शायद और बड़ा हो जाता. But I love this cutout. I love the sleeves and the whole fit. It's very casual and very nice. Next up is this very pretty white top with blue lining. Love white and blue का combo. इसमें भी buttons लगे हुए हैं and has very nice sleeves like that. I wore it like 3 days ago for a shoot and उसमें मुझे गुब्बारे क्या बोलते हैं बबल्स उड़ाने थे, तो उसका जो पानी है पर्पल कलर का वो मेरे टी शर्ट्स पे गिर गया. ओवरऑल द फिट इज रियली नाइस. आई लव द नेक. इट इज सो प्रिटी. ज्यादा प्लंजी भी नहीं है एंड इट्स नॉट बंद ऑल्सो. कुछ भी नेक पीस अगर पहना हो तो बहुत सुंदर लगेगा. वेरी कैजुअल, वेरी प्रिटी. दिस इज such a me kind of top. Coming on to t-shirts, the first t-shirt that I have is this one. It's in baby pink color with a red lining and उसपे ये love
एंग्रेव किया हुआ है। ये बहुत सिंपल सी टी शर्ट है, कुछ भी नहीं आगे पीछे। दिस इज अ रेगुलर फिट टी शर्ट बट आई वांटेड एन ओवरसाइज टी शर्ट, so I got it in large. I love this color, it's so beautiful and this little detail is amazing. Next t-shirt है this one. This is a different material, like you can feel it. जैसे इसका material बहुत soft सा cotton है but इसका काफी मोटा कपड़ा types है. Print is also very gorgeous. The feel of the t-shirt is really nice. The fit is also really nice. I love it. I love t-shirts and especially now when I'm kind of insecure of wearing certain kind of clothes. The next t-shirt, I am not sure if I should return it, so you guys tell me, okay? तो मैं scroll कर रही थी H&M का app and वहाँ पे I saw this t-shirt, okay? And उस पे लिखा था Blondie. Now if you know me or if you know what I mean, मुझे लगा कि this person is Taylor Swift. Like उसी को तो हम Blondie बोलते हैं. I got so excited. I was like, what? Hello. एंड ये पिक्चर में थोड़ी बहुत उसके जैसी लग भी रही थी. आई लेजिट थॉट दिस इज टेलर एंड बिना सोचे समझे आई गॉट दिस टी शर्ट. मुझे तो यहाँ से लेडी गागा लग रही है, पर लेडी गागा को ब्लॉन्डी कौन बोलता है? इट्स इन साइज स्मॉल बाय द वे एंड दिस इज ओवरसाइज. दिस कैन बी अ टी शर्ट ड्रेस. ओके, अब आती है पार्टी क्लोथ्स पे. सो द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस. इट्स अ स्पार्कली ब्रालेट. इट्स इन द साइज मीडियम. डिडंट फिट मी एंड आई एम नॉट गोना वेयर इट एज वेल. दिस इज जस्ट नॉट व्हाट आई वेयर. दिस इज अ वेरी क्यूट टॉप फॉर दोज हु लाइक टू वेयर इट. द रीजन दो दैट आई गॉट दिस इज बिकॉज I also got this. It's a brown mesh top which is fully mesh. मुझे इसके अंदर पहनने के लिए कुछ चाहिए था but I think I will go with camisoles only because I'm keeping this top. बहुत ज़्यादा काम आ सकता है. This is also in size medium. ये तो मैं रिटर्न ही करने वाली हूँ. Sorry. Then I got this dress जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा excited थी but इसने मुझे डिसअपॉइंट कर लिया. इट इज ब्लैक पिंक मर्च. आई वाज सो एक्साइटेड फॉर इट बट इस ड्रेस की स्ट्रैप्स एडजस्टेबल नहीं है बिल्कुल भी. इट्स अ बॉडीकॉन ड्रेस. I'm not saying it's bad but it just doesn't fit me like it should fit somebody, so I'm gonna return it and I hope this goes to somebody who can carry it well. Then I got these crop tops which are very dressy kind of crop tops. इनका भी टैग नहीं निकाला है because I'm not sure. They are in the size small. It's like one shoulder gathered top जो कि पार्टीज वगैरह में बहुत अच्छा लगेगा. दिस इज अ ब्राइट रेड कलर. आई थिंक आई एम गोना कीप दिस वन. द फिट इज ओके, इट्स नॉट दैट ग्रेट. आई थिंक इट्स वेरी टाइट from here. I don't know what you think. मैंने सेम टॉप एक्चुअली न्यूड कलर में भी लिया. ये कलर तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा था तो ये वाला तो मैं पक्का रिटर्न कर रही हूँ. आई जस्ट थिंक दैट दिस शुड हैव बीन इन लार्जर साइज बट अगर मैं एक साइज ज्यादा लेती तो मुझे यहाँ से लूज हो जाता. सम क्लोथ्स आर जस्ट नॉट मेंट फॉर सर्टेन बॉडीज which is okay. Next I got two black pants. I didn't realize my mic was off. This one is a parachute pant which is in the size medium जो कि मुझे बहुत अजीब साइजिंग आ रही है. पहले मैंने स्मॉल ही डाला था कार्ट में लेकिन वो सोल्ड आउट हो गया था जब तक मैं चेकआउट कर रही थी तो मुझे मीडियम लेना पड़ा. जो कपड़ा है आई डोंट थिंक इट्स दैट नाइस. बहुत ही अजीब सी फिटिंग आती है इसकी. आई डोंट नो व्हाई. आई थिंक ये मेरा साइज नहीं है मे बी इसलिए एंड आई एम गोना रिटर्न इट फॉर श्योर. वैसे मुझे दो में से एक ही रखना था तो okay, so these are cargo pants and these might be my favorite pants ever. H&M के जो pants होते हैं वो इतने बढ़िया होते हैं. मैं बहुत सारे pants हैं जो like my favorite. I wear them every time और मेरे सारे pants H&M के हैं. तो ये है in the size 36. पहले मेरा size 34 था, अब 36 हो गया है. This fits me perfectly. I have worn this around 6 to 7 times by now and नीचे से थोड़ा गंदा हो गया. If I wear shoes तो ये थोड़ा ही जमीन पे लगता है. I didn't have to alter it or cut it and it's kind of low waist but the fit is amazing. You can wear it with anything, literally anything. T-shirts, crop tops, party tops, shoes, heels, whatever. I love. Okay, that's it you guys. That was my H&M haul. I hope you liked this video. Let me know in the comment section which top do you think was the best looking. मैं सारे links description में डाल दूंगी. If some are sold out or not available anymore, I'm really sorry. It's not my fault. I will see you next time. I hope you enjoyed this video. Thank you so much for watching. Bye. What a wonderful world.